Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. I'm excited to be talking with you one-on-one in this year's first solo episode. और मज़े की बात यह है कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वेरी लास्ट मिनट बिकॉज आई हैड अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन माई थ्रोट. आई एम स्टिल रिकवरिंग, तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट लग रही है तो प्लीज़ बेयर विद इट. तो इस एपिसोड के टॉपिक के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था और पूछा था कि शैल आई टॉक अबाउट माई वर्ड ऑफ द ईयर और द टैरो रीडिंग फॉर लिटिल फिक्सेस और माई 2024 plans or all of this. 2024 plans one, so I'll mainly talk about them, but the other things will also be a part because वो भी 2024 plan ही तो है. Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is your host Matri, a social media professional, a mother, and a simple yet sassy woman just like you. Join me for 3 simple and practical ideas that help you in transforming into your best self. This mental health and personal growth podcast is a reminder that you matter. I don't know कि लोग पूरे 1 साल के गोल्स कैसे बना लेते हैं. I always have a few ideas, पर stringent goals कभी नहीं बनाए, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल. लास्ट 2-3 साल से एक वर्ड ऑफ द ईयर ज़रूर रख लेती हूँ और जब किसी सिचुएशन में होती हूँ तो उसके बारे में सोचती हूँ. तो सेल्फ वर्थ हैज़ बिन बिग फॉर मी सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स और इस साल भी आई कीप वर्किंग ऑन इट. बट माई वर्ड फॉर 2024 इज़ रेजिलियंस. पहले मैंने रिस्क डिसाइड किया था बिकॉज आई एम अ वेरी रिस्क अवर्स पर्सन एंड आई वॉन्ट टू टेक सम रिस्क दिस ईयर. फिर चेंज क्यों किया? Because I had an epiphany during one of the sessions of the manifestation program I did with Manifestation Kapitara. So हम लोग प्रोग्राम में एक मेडिटेशन कर रहे थे जिसमें अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना था. Now see, I'm not very good at visualizing things, but उस दिन जो भी किया ना उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि चाहे सेल्फ वर्थ बढ़ानी हो या रिस्क लेना हो, I need to be a lot more resilient. So here we are, and अब तक तो I'm on track. I mean, कुछ सेटबैक होता है तो आई जस्ट से टू माई सेल्फ रेजिलियंस या टेनासिटी, अडेप्टेबिलिटी. एंड एज एक्सपेक्टेड ऐसा सोचने से ना चीज़ें ठीक नहीं हो जाती पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाती है विच स्टॉप्स मी फ्रॉम क्रम्बलिंग. सो लास्ट ईयर्स वर्ड वॉज एक्शन. पर जब एक्शन के रिजल्ट्स ना आए तो बाउंस बैक करना ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो गोना वर्क ऑन बीइंग मोर रेजिलियंट दिस ईयर. Professional side पे I'll keep doing social media management work this year too, but again have no plans to expand it. I'm happy with the work I have, and limiting it gives me more time for little fixes. So January 2024 में I have completed 10 years as a social media professional, so I think I'm good at my work too. और podcasting की बात करूँ तो it's always a cycle of आज motivated, कल deflated, but not open to giving up. अब ना मैंने लिटिल फिक्सेस का टैरो भी करवाया है इस साल. अपना तो मैं करवाती आ रही हूँ आई थिंक 2 साल से. इस बार मैंने पॉडकास्ट का स्पेसिफिकली करवाया. तो द टैरो रीडर हैज सजेस्टेड सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर द पॉडकास्ट, बट दैट्स नॉट ऑल. शी सेड दैट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट का पर्पस मेरी और आपकी हीलिंग है. बिलीव मी, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ओके. शी सेड कि पॉडकास्ट के कॉन्वर्सेशन से मैत्री का एक बेटर वर्जन बन रहा है और उसके लिसनर्स का भी, भले ही 5 लिसनर्स हो. Now, this is the best thing I have heard about this podcast, but this also means कि ऐसी सीक्रेट चीज़ को आप कमर्शलाइज नहीं कर सकते, which is a little disappointing to be honest, but again, your and my healing over everything. And if you're curious, I get my tarot done by Archa Chopra, who is on Instagram as the Sacred Priestess. Okay, अब अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो in my 1 year of moving here to Bangalore, I have made 0 new friends. But quite a few acquaintances and some might become friends later. तो पहले ना मैं परेशान हो रही थी कि फ्रेंड्स कैसे बनाऊँ, क्यों नहीं वाइब मिल रही. पर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही है कि इट्स अ डिफरेंट प्लेस विद वेरी डिफरेंट पीपल, सो मेकिंग फ्रेंड्स विल टेक टाइम. एंड यू नो वॉट, इवन माई 2024 टैरो सेड कि दिस ईयर आई लेट गो ऑफ माई नीड टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु आर फिजिकली क्लोज एंड विल एक्सेप्ट कि ट्रू फ्रेंड्स में फिजिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करती. चलिए आई अग्री विद दिस, बट कहीं ना कहीं वो आ जाता है कि हमारे आसपास जो हैं उनसे भी थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाए, फ्रेंड से मिलना हो जाए बार बार. मतलब बेस्ट थिंग तो यही है कि जो आपके अपने फ्रेंड्स वो छूटे ही नहीं, लेकिन हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो आई थिंक आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट एक्सेप्टेंस. और फिटनेस फ्रंट पे आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू द जिम.
and have embraced yoga. Yes, from this month and I'm liking it. तो body acceptance के साथ काफ़ी struggle रहा है मेरा, अभी भी चल रहा है, and I'll talk about it in another episode when I'm ready for it. So 2024 के main ideas हैं अच्छी health, better relationships, obviously resilience and building something new. Now this last one is a secret for now, but I'll start working on it this year. Now it's my dream project and is an extension of Little Fixes podcast. बट इसको मैं अपने आप बिल्ड कर रही हूँ, किसी और की हेल्प ले रही हूँ. बट इट्स नॉट समथिंग कि वो जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो समथिंग बिग इज कमिंग अप एंड देन पीपल रिवील अ ह्यूज कोलैबोरेशन समथिंग लाइक दैट. तो ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई होप टू ब्रिंग इट आउट this year only. There will be some changes, some good changes, I hope. Yeah, wait for that. Before I end, let me tell you that you don't have to have a word of the year. And also you don't need to work on a secret project. Word of the year मुझे आ जाता है कि हाँ ये कर सकते हैं, तो मैं उस पर वर्क कर लेती हूँ. लाइक आई थिंक ये 2-3 साल से मैं ऐसा कर रही हूँ. और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो. आप सोशल मीडिया पे देख के कि अरे इसका भी वर्ड ऑफ द ईयर है, इसका भी है, मेरा क्यों नहीं है. तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई नो जब वो कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट डालता है या उसको रिवील करता है तो वी फील अ लॉट ऑफ फोमो. तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका है वो आपके पास ही आएगा. तो एक्चुअली ना कूल लगने के लिए या एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. Now, external validation is one of my other struggles which I am working on and have some insights on it, but I will again share it in another episode. So let's just start with being willing to learn to love ourselves and approving of ourselves. And things will start falling into place. So I hope that you took something away from this episode. और अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट हुआ है, तो प्लीज हेल्प लिटिल फिक्सेस रीच मोर पीपल बाय शेयरिंग इट विद समवन यू केयर अबाउट. यू कैन ऑल्सो गिव अस अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है @littlepixespodcast. दिस हेल्प्स मी इन ग्रोइंग द पॉडकास्ट और बहुत सारे और लोगों की हेल्प भी होती है इसको सुन के. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय. When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you will get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.